Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. This is Tuba Akram and you are watching e-learning. Welcome to our very own course that is Everyday English Expressions. Before starting my video, I request my all audience to share this knowledge, to spread it with your friends and family and the ones who may not have access to the paid English courses. Thank you. So moving forward, today's topic is a connected topic, a linked topic from the last video. Lastly, मैंने आपको ये पढ़ाया कि आप no कैसे कह सकते हैं. Instead of no, there are the advanced way to say the no, basically. And it takes basically, मैं personally समझती हूँ कि friends को, family members को, boss को, colleagues को हमें no कहने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है. So that's why in the last lecture मैंने आपको polite version, formal version और casual version तीनों जो है मैंने आपको समझाया कि आप किस तरह से आप easy लोगों को no कह सकते हैं और focus कर सकते हैं अपने current goals, ठीक है, short term and long term goals as well. ओके सो अब जब नो सिखाया है तो यस भी सिखाऊंगी हाउ यू कैन से यस इन अ बेटर वे बिकॉज मैंने ये देखा है कि जब भी सपोज इफ आई आस्क समवन आई एम अरेंजिंग अ पिकनिक टू फार्म हाउस हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट. ठीक है, मैं एक पिकनिक अरेंज कर रही हूँ फार्म हाउस पर, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें. सो उसका रिस्पॉन्स आता है yes I am, yes I am, yes, yeah, that's it. और ये जो है ये personally I dislike the most. So how in a better way आप किस तरह से जो है yes को कह सकते हैं. Alright, so let's start. So first one is basically the phrase, the alternate phrase जिसमें जो है आप easily yes कह सकते हैं without saying yes. Alright, so number one is consider it done. ठीक है, अगर आपकी टीचर या आपके बॉस या कोई भी XYZ आपसे अगर कहते हैं कि can you please pass me the file, so, or can you please make a presentation over this XYZ topic. So you can easily say that, consider it done, ma'am, or consider it done, sir. Okay. Next one is 1,000 times yes. It is basically when you are strongly agree with something or someone. Alright, so you can easily say that instead of saying yes, you can easily say that 1,000 times yes. Would you like to join us on Amna's birthday party? So you can say that, yeah, 1,000 times yes. Alright. Okay. Next one is ace. Ace, brilliant. So what is ace brilliant? Basically, ace is a word which means that to pass anything with फ्लाइंग कलर्स, मतलब कोई भी चीज पास करना किसी अच्छे मार्क्स से. ठीक है, सो शी एस द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. सो एस इज द वर्ड बेसिकली जिसको आप यस करके जो है यूज कर सकते हैं. सपोज समवन गिव्स यू अ आइडिया और अ बिजनेस आइडिया और समथिंग जिसपे आपने इजीली कहा है एस ब्रिलियंट. सो इट्स मीन दैट आपका मैसेज कन्वे हो गया कि आप उस आइडिया के साथ, उस पीस ऑफ एडवाइस के साथ अग्री कर रहे हैं. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो से दैट ऑन द सेम पेज. सपोज यू वांट टू बी एन इंजीनियर, alright, and your father also wants to join an engineering university or an institute. So you can say that when your father says to you, I personally want you to see as an engineer. So you can easily say that, Dad, me, and you both are on the same page. Alright? इसके अलावा on the same page को आप ऐसे भी कह सकते हैं, shares the same wavelength. Me and my bestie always share the same wavelength.
अलावा नाउ these are the 5 basically alternate phrases जिसको आप use कर सकते हैं instead of yes. Alright. Now formally what you can use, there are the 3 formal settings which I am gonna tell you. Number 1, I conquer. I conquer means होता है strongly agree. So I fully concur with the board of directors to regarding this year's increment policy. All right. So I concur का मतलब है strongly agree चीज, ठीक है. So instead of yes, you can use it. Okay. Next one is I subscribe. Okay. I subscribe. Subscribe is not that is basically which we use as a channel. कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. Yes, do it right now if you have not. So I subscribe is basically in terms of agree as well, agreement as well, ठीक है, और to appreciate the idea of someone, ठीक है. जब आप किसी से agree कर रहे हो या किसी की advice से, idea से, so you can easily say I subscribe to, like I subscribe to the idea that if you love someone, show it by your actions, not your words. All right. Third, formally you can use it. Formal phrases. I second. You can use it like I second the decision to postpone the annual dinner. It's mean that जब आपको किसी कि हाँ में हाँ मिलानी हो, सपोज आपका भी पर्सपेक्टिव वही है और अगले बंदे का भी यही है, जिसने डिसीजन लिया है, सो यू सेकंड द डिसीजन. ऑलराइट. और आपके अगर आपसे कोई चीज पूछ रहे हैं रिगार्डिंग, तो आप ये कैसे एडवाइस मांगी है या सजेशन मांगी है, तो यू कैन इजीली से दैट आई सेकंड द एडवाइस और आई सेकंड द सजेशन. जो भी सजेशन है उसके साथ आप उसको आगे लगा सकते हैं, ठीक है. So here are the 3 formal settings जिसको आप यूज कर सकते हैं जब आप किसी चीज से अग्री होते हैं और आप yes कहने के बजाय I conquer, I second the decision, I second the advice, I second the idea और I subscribe. Third one is I subscribe. इसको यूज कर सकते हैं formal. Alright. And the most casual or you can say slang. Slang में आप yes को किस तरह से कह सकते हैं कि जब आपने yes as a short word, so you can use it indeed. Number 2 is certainly, absolutely, why not, or count me in. So these are the 5 easiest and fastest way you can use instead of yes. So you're gonna basically sound a native and a fluent English speaker. So this is all about today's lecture. I hope you memorize those words and use it in your daily conversation. आपको इसमें से जो भी बहुत अच्छा लगा है, जो भी वर्ड आप अपनी डेली रूटीन में जो है यूज करने वाले हैं, उसको कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. अपना ख्याल रखें. मैं कोशिश करूंगी कि आप अपना फीडबैक मुझे देते रहें, उसको मैं खुद से पढूं और उन टॉपिक्स को जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उन पर वीडियोस बनाऊं. So do tell me and do share your views as well. Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.